Hello all. Okay, I welcome you all to this last and the third session for the APSC Prelims and our associated courses, which will give you some of the details about this exam as well as also some of the strategies to even clear this exam at the first go. So, as I have conducted with the first session, and then my colleague went on even for my second session. So here I am back with this third session and also the very last session of the CSAP APAC prelim specific sessions. So the very first day I have seen a good response from you all people. Okay. So thanks for coming over to this platform and letting us know your queries so that we could directly make your plan of becoming a civil servant success. Okay, so I again welcome you all to this session. And today, though we have that day discussed about the exam, about the specificness of this exam with respective to the syllabus, and also we have discussed about various strategies that you need to take when you are preparing for this respective exam. Okay, so today we will enhance our preparations. We will not discuss about the respective syllabus. We will not discuss something very much related to the static or the dynamic portions. So basically over here today, I will give you some of the strategies about how to attempt some of the questions, basically in prelims, and also if time permits, then I will go for even some of the strategies for mains. So I welcome again you all to this platform of CSAP, Civil Service Achievers Point. Okay, and we have been rendering to provide coaching as well as guides. We are acting as guides, we are acting as mentors in this whole state of Assam as well as in even the Northeast, so that we could make some of the successful candidates out from our respective institute. Okay, so therefore we have seen a good success in the coming time in the last few years, and also with the coming times we are again having some of the strategies to make this as a largest learning platform so that we could achieve more number of ranks in the coming times. So you could see our selections in the past few years. Okay, so if you also wants to become a part of this photos, please do join us and also come to us for any queries. We have our contact number over here. Okay, so therefore today I just wants to say about you some of the strategies associated with the prelims. Okay, so we are all done with the syllabus the very first day. So today I will just discuss about some of the paper solving techniques that every aspirant do follows, and therefore if you are having a right guidance and a correct approach, then yes, once you are directly having that, you will surely to clear this prelims at the first go. So in my point of view, I have got a plan to directly make you a success in the coming exams. So I will directly go with this method, which is 3210E method. Okay, so use this approach to boost your marks. So it is one of the most important approaches which we will elaborate in this article, which is 3210E method. Okay, so it is directly 3210 elimination method. So this method can also be called the 100, 50, 33 and 25% method. Okay, so we will go ahead with this method. We will learn about this method. But before it, remember that this is purely for the prelims purpose. Okay, don't confuse it with the mains purpose. So here I will go with the prelims and then I will continue with the mains. So this is purely prelim specific. So therefore you have to remember this one, that is not 1, 2, 3,
You have to remember it 3210. That is 3210 elimination method, which you can directly convert it into percentile about 100, 50, 33, and 25% method. Now, if I come up to the explanation of this, okay, see, the essence here is to solve this APSC question paper in 4 stages. And based on the numbers of answer choices, you are able to eliminate. So don't start solving questions at a stretch from 1 to 100, but rather use multiple rounds to solve this number of questions. So the stages which I have said you about 3210E elimination method are called 3E round, 2E round, 1E round, and 0E round. Today, this method may sound boring, this method may sound tricky, and also this method may sound non-understandable. But if you apply this method regularly during the time you are preparing for prelims, during the time when you are solving question papers, when you are directly attempting mock test, then surely at some point of time this will be beneficial to you all. And that I can guarantee you to my core of my heart. So if I start with the round 1 method, which is the 3E elimination method, that is the 3 elimination. It's basically saying about the 100% sure questions. Because we have already seen over here about 3 is corresponding to 100, 2 is corresponding to 50, 1 is corresponding to 33, and 0 is corresponding to 25. So therefore, if I see about over here now, round 1, that is the 3E, that is 100% sure questions. So in round 1, solve questions which you are 100% sure about. And if you have eliminated 3 options out of 4, you are left with 1 option, which is obviously your correct answer. So in round 1, go for only questions in which you have eliminated 3 options. And ideally, you should have get at least 35 questions with 100% surety. How many number of questions we have got in the paper? It is around 100. So out of 100, if you are getting 35 number of direct questions, which you are 100% sure, and definitely you will get so. In every question paper, this is the requirement. This 100 questions, amongst the 100 questions, we could see that 30 to 35 number of questions are pretty easy. It's simply something which you have studied in the past, and it's basically static, or it may be something associated with your general knowledge. So supposedly if I asked about the full form of SAARC, that is the South Asian Association for Regional Corporation. If I will go with the definition or with the full form of Niti Aayog, that is direct questions which you need to attempt over here. If I directly go with what is RBI, if you know tate dia ase, first option, it's a constitutional body. Second option, it's a judicial body. Third option, it's a quasi-judicial body. And the fourth option, it's a regulatory body. So obviously over here, you have already omitted 3 number of questions because RBI is not mentioned in our constitution. Therefore, obviously, it's not a constitutional body. Also, it cannot be a judicial body because it has got no relation with the judiciary. Also, it cannot be quasi-judicial because it has not been formed by any acts of the respective government and it has not been given some of the quasi-judicial powers. When I say about the judiciary, that means what? It has got both the powers. That is, it has got powers with respective to penalty and also with respective to punishments. But with a quasi-judicial body, we could see that only penalization provisions are available. So in that sense, I could directly eliminate the 3 options and I could got towards the 4th option, which is saying RBI to be a regulatory body. So such number of questions are pretty available in your context, in your respective exams. And therefore, we could see that this is a very relevant type of questions that is very much asked in this respective exam. So therefore, you could see that over here, you are directly getting a number of questions, which is very much direct
and you are directly attempting it at one go. So therefore 35 number of questions are pretty available. So therefore just mark against every correct answers that you are giving, this 35 number of questions, marked it as 3E. Okay. Now coming to the second part, that is the round 2. What was round 2 or 2E comprises of? It is 50% sure questions. So in round 2, solve questions which are 50% sure. And in other words, you have eliminated 2 options out of 4 options, and you are left with only 2 options, out of which it would be correct answer. One would be correct answer. So if round 2, go only for questions in which you have eliminated 2 options, because you have got 3 number of points. Okay, so you have got this 4 MCQs. 1 will be defining something, 2 will be defining something, 3 will be defining something, and 4 will be defining something. So if round 2, go for only questions which you have eliminated at least 2 options. If you are going for the elimination of the 2 options, that means you are left with 2. That means you are more closer towards the real answer, which can be 3, which can be 4. So therefore, you should go for this number of questions in the second round. So if the probability of getting a question correct is more than 25%, we strongly suggest to take a risk and attempt that question. So as per the statistical analysis, you have more probability of ending up with positive marks. Because supposedly, if I say something directly with association with this, supposedly, we know about bodies. Again, I will refer it to some of the bodies. Okay. Again, I will refer it to some of the bodies. Supposedly, if I say something about the Comptroller and Auditor General. Okay. So we can see that this Comptroller or Auditor General is one of the constitutional body. Okay. So it's one of the constitutional body which has been mentioned in our respective constitution. So once you are directly going in for the CAG, which is a constitutional body mentioned under Article 148 to around 151 with respective to its functions and its role. So therefore, you know that this is a constitutional body. But supposedly you have forgotten. Okay, supposedly you have forgotten. And it has been asked that what are the relevant articles associated with CAG. Okay, so it has been said about that 148 CAG. Okay, supposedly this is A option. In the B option, it has been said about supposedly it is 168. Okay, supposedly C, it is given 76. Okay, and lastly, in the D part, it is given Article 51A. Okay, so therefore over here we could see that we can directly omit 2 number of articles or 2 number of points. That is, you might get confused with this 288 similars, 148 and 168. But over here, when I say about Article 76, it says about the Attorney General of India. And Article 51A directly says about the fundamental duties. So in that relevant context, you are left with 2 options. And amongst this, one is correct. Then supposedly you have got a tendency that I am pretty sure with this 148, but I am not sure with this 168. So this is the type of risk that you need to take in your exams in the second round, where you are sure with the 50% sure questions. And then if you could interpret around Article 148, then obviously you are directly correct. Okay, so you are basically correct with this respective article. Because once you are going with this 168, it basically refers on to the respective state legislature. So we know about that Article 168 to around 177, it says basically about the state legislature. But 148 basically comes under the union executive. So therefore, you can directly omit the second option and you can go ahead with the first option, going ahead with your round 2.
Okay, so here you can say that ideally you should get at least 35 questions with 50% surety. And if you have studied reasonably well, for that you have also, there is a clause that you need to study well. Without studying, you cannot directly go on for such process. Okay, then if I see for the last one, that against every 2E category, questions on question paper, mark 2E. Okay, then coming to the round 3, which says about the 33% sure questions. Okay, so in round 3, solve questions which are 33% sure. In other words, if you have eliminated one wrong option out of 4, you are left with only 3 options, out of which one would be the correct answer. So in round 3, go for only questions in which you have eliminated one option. And if the probability of getting a question correct is more than 25%, we strongly suggest to take a risk and attempt that respective question, because it will end up going ahead with a positive marks. And that is pretty sure from my side. Okay, so over here, you have to eliminate one wrong option out of 4. You are left with 3 options, out of which one would be the correct answer. Means out of 3 questions, 3 options left to you: A, B, and C. And supposedly you have omitted the D. You are pretty sure that D cannot be. Out of these 3, one is correct answer. So you have to make only 2 wrong. So you have to analyze the question first, and then you could directly interpret the 2 number of questions which are wrong over here. So that is basically the round 3 type of questions, which is going ahead with the 33% of sure questions. So around 20 questions in your paper will be of this level, where you will directly come up with round 3, that is 33% sure. So against every 2E category question on the question paper, give a mark 1E. Now if I comes with the round 4, that is 0E, in which 25% sure questions which you have no idea basically. That's the crucial part over here. So this type of questions may be around what? 10 number of questions. 10 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जहां पे हम लोग का कोई आइडिया ही नहीं होता है कि असली में यहाँ पे कोई इंटरप्रिटेशन सही है या गलत है. We do not know about all these things. So there may be 10 questions which will be very difficult to answer. However, you have hard to study. So among this, you have eliminated 0 option out of 4 options, out of which one would be the correct answer. So you need to eliminate 3, but you don't know any of the respective options. So that is the most number of questions over here. That is around 10 questions will directly come on by this respective site. Okay, so 10 question ऐसे रहेंगे. So try to make such number of questions and mark it 0E, where you have not achieved anything, because you either don't know or probably you know something. So कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा. So there cannot be anything associated with this. So therefore, you need to go ahead with these questions to be marked as 0E, which is 25% sure questions. Okay, now analyze your responses and count the 3E, 2E, 1E, and 0E. Okay, so with respective to the number of questions that you have marked, okay, तो ऐसे जब मॉक टेस्ट दोगे तो ऐसे मार्क करो कि कौन सा मेरे को 3 ऑप्शंस आता था, 1 ऑप्शन नहीं आता था. Okay, supposedly this type of things which is basically or you can say the vice versa, कि मेरे को बस सही आंसर मेरे को पता है, so that I can easily omit the number of 3 questions. So 3 जितने भी ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन थे, उसको omit करके मैं डायरेक्टली अपने आंसर तक पहुंच गया. तो वो 3 क्वेश्चंस कितना है मार्क करो और उसको काउंट करो कि how many number of 3 questions that you are directly making. Supposedly, over here, I could directly count the 3 number of questions: 1, 2, 3, 4, 5, 6, then 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Okay, so 35 number of questions are the questions which are marked as 3E, are the questions which I know pretty well,
कि हाँ मेरे को पता है आरबीआई इज अ रेगुलेटरी बॉडी, उसके अलावा ये कुछ हो ही नहीं सकता. सो दिस इज द थिंग amongst the option that has been given. So therefore we could mark these things something like this. तो उसी की तरह हम लोग 2E मार्क करें जहां पे हम लोग को 50% आता था, 1E मार्क करें जहां पे 33% आता था, और 10E मार्क करें जहां पे हम लोग को कुछ नहीं आता था. सो दैट्स द थिंग यू हैव टू मार्क. सो एक बार अगर ऐसे करके हम लोग एनालाइज कर लिए ना, दैट मीन्स यू आर प्रिटी श्योर अबाउट योर सिलेक्शन इन योर रेस्पेक्टिव प्रीलिम्स. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जो बहुत बच्चे यहां पे मिस हो जाते हैं. ओके, बिकॉज दे डू नॉट नो अबाउट हाउ टू टैकल द नंबर ऑफ क्वेश्चंस. और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन छूट जाता है जिसका हम लोग को पूरा आंसर पता रहता है. तो ऐसे क्वेश्चन छूट जाता है just because we are not following the respective approach, which is this 3, 2, 1 and 0. That is 100%, 50%, 33% and 25%. ये हम लोग फॉलो नहीं करते, क्योंकि ये अगर हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, that means we are directly not clearing of this prelims and it will be very much difficult for us to even get the respective marks that what we won in this respective exam. सो ये एक बेसिक फंडा है जो कि हमें यहां पे मिलता है. ओके, देन इफ आई कम ऑन टू दिस, दैट you would be very much surprised to see the number of additional marks you have gained by attempting questions you don't know in the 2E, 1E and the 0E categories. Because if you get constantly positive marks in these questions, 0E, 1E and 2E in the mock exams, increase the number of questions attempted to further increase your marks. Because अगर हम लोग mock test दे रहे हैं, ओके, और इस मॉक टेस्ट में अगर हम लोग ऐसे मार्किंग्स करते चले जा रहे हैं, तो इन सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द एग्जाम्स आल्सो वी कुड रिकॉग्नाइज which are the questions that we needs to attempt and which are the questions we needs to attempt. Because if you are going on for this attempt at a regular instant, you could see that slowly and slowly we would directly catch up the pace. क्योंकि ये फेस कैचअप करना हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. Because once you are directly knowing such number of questions which are you are very slow, तो यहां पे मैं 3 तो लिखा ही नहीं हूं, मैं बस 2E, 1E और 0E के बारे में लिखा हूं. So you'd be surprised to see the number of additional marks you are gaining in from this 2E, 1E and 0E. 2E तो बहुत ज्यादा रेलेवेंट है. तो 1E से अगर मान लो हम लोग को कम से कम 5 क्वेश्चंस भी आ गया, तो जस्ट थिंक 5 into 2 is equals to 10 marks. So just think about the marks that you will score in this respective GS, and so by mind relief you could directly prepare for your respective mains exam without any tension. कितना भी कट ऑफ चला जाए मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है, because already I am above the cross mark. ओके, मैं ऑलरेडी above the cross mark हूं, तो इसीलिए मेरे को कोई टेंशन नहीं है यहां पे. So that's the thing that you needs to analyze over here. This is the approach that you need to take, and sincerely if you go for this approach, you could directly see that how well you could go ahead with attempting the questions that it is very much coming in your mock test series. Okay, so therefore you need to remember some of the things which are basically for this question paper solving. See, if the number of questions attempted after the third round is less than 80, ओके, बिकॉज एक हम लोग का एफोर्ट रहता है कि 80 to 85 हम लोग को अटेम्प्ट करना होता है, ओके, टू बी वेरी मच सिक्योर. ओके, मतलब 85 के आसपास तो हम लोग को करना ही पड़ता है. ओके, दैट विल बी गो +-2 चला जाता है कभी कभी, लेकिन 85 तो हम लोग को 80-85 के बीच में हम लोग को अटेम्प्ट करना पड़ता है. तो सपोजली इवन आफ्टर थर्ड राउंड, ओके, थर्ड राउंड मीन्स व्हाट? इट इज राउंड. आई विल शो यू अगेन. सो आई एम टेलिंग अबाउट द थर्ड राउंड बीइंग 1E where you are 33% sure. That means you have eliminated one wrong option out of 4 and 3 options are left, out of which 1 is the correct answer. That means you have to eliminate more number of 2 options. So यहाँ पे tips and tricks में क्या है कि like if the number of questions attempted after the third round is less than 80, it's not a bad strategy to take some additional risk and go for the fourth round to answer questions which you are unsure about all the 4 answer options. क्योंकि देखो
अगर तुम नहीं करोगे, सिलेक्ट तो वैसे भी नहीं होने वाले हो, बिकॉज द कट ऑफ विल गो अबव 80 ओनली। सिलेक्ट तो तुम ऐसे ही नहीं होगे। लेकिन अगर बाई चांस तुमने थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क ले लिया, दैट मीन्स you could see that you could achieve the cutoff marks at a very proper way. So therefore ये तब करना है, फोर्थ राउंड तक तब जाना है जब हम लोग को क्या मिलेगा, जब हम लोग को 80 के नीचे एक मिलेगा आफ्टर इवन द थर्ड राउंड। अगर थर्ड राउंड में ही 80 के ऊपर चले गए हो, देन इट इज ऑल ओके। ओके, तब एक दो तीन क्वेश्चंस तुम लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, नहीं भी करोगे तब भी ठीक है। लेकिन सपोजली 80 के नीचे, मान लो 70, 72, 68 ऐसे के बीच में कहीं पे हो, ओके, क्योंकि ऑब्वियसली तुम लोग सोच सकते हो कि 70 इंटू 2 इज 140, तो कट ऑफ तो हो ही जाएगा। लेकिन बेटा बेटी यहां पे क्या रहता है, यहां पे रहता है निगेटिव मार्किंग। तो एक बार अगर निगेटिव मार्किंग कहीं पे लग गया, मतलब वो आंसर गया, 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही कम से कम 5 6 10 नंबर लूज करना हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए यहां पे निगेटिव मार्किंग रहता है। एंड डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, बिकॉज यहां पे बात क्या आता है, यहां पे बात आता है ह्यूमन एरर का। यहां पे बात आता है ह्यूमन एरर, बिकॉज वंस यू आर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन पेपर्स, ये क्वेश्चन पेपर जब तुम अटेम्प्ट करोगे, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, अगर मान लो यहां पे जो हम लोग का ओएमआर शीट रहता है, ओके, यहां पे ऐसे चार ऐसे गोला भरा रहता है, ठीक है, ऐसे गोला भरा रहता है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग मान लो ये ऑप्शन ऐसे फुल अप किए हैं, ठीक है। तो बाय चांस हम लोग सोचे कि कहीं कभी कभी ह्यूमन एरर होता है, माइंड खेलती रहती है हम लोग के साथ, तो कभी कभी माइंड स्टेबलाइज नहीं होता, वैसे दो तीन क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो हम लोग का माइंड ऐसे ही डर जाएंगे, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को मार्क करना चाहिए ए, लेकिन मार्क कर देते हैं बी, और उसके बाद जब हम लोग फुल मार्किंग कर लेते हैं, उसके बाद पता चलता है कि असली में मेरे को मार्क करना था ए, लेकिन हो गया बी, तो गया ये मार्क। तुम ऐसे क्रॉस करके एक ए करेक्ट है ऐसे करके नहीं लिख सकते हो यहां पे। एक बार गलत मार्क कर दिया मतलब कर, और नो डबल मार्किंग इज बेसिकली अलाउड। और अगर मान लो इसका, अगर मान लो आधा भी अगर शेड कर दिया ना, ऐसे आधा भी शेड कर दिया, उसके बाद ओ सॉरी सॉरी ये नहीं था, ये ए था, ए को फुल करता हूं, तो ये भी एक कंसिडर करेंगे रॉन्ग के हिसाब से। तो ये सब ह्यूमन एरर्स तो रहता ही है। ऊपर से कभी कभी हम लोग का ओवर कॉन्फिडेंस भी खा लेता है, कि हम लोग को ऐसा लगता है कि यही आंसर है, लेकिन बाद में पता चलता है ओ माय गॉड व्हाट मिस्टेक आई हैव डन, ये आंसर तो था नहीं, ये तो अभी अभी रिसेंटली चेंज हुआ था, मेरे को पता था, मैं कल पढ़ के आया था। तो उस टाइम हम लोग को फिर से वापस आके उसको सुधारने का मौका नहीं मिलता है, बिकॉज वंस अ रॉन्ग इज डन इट कैन नॉट बी अनडन in the exams. So please, my dear all, please do remember these things, because once you are directly doing something which is very wrong, you cannot just go undone. तो ये हम लोग का एक रेस्पेक्टिव स्ट्रेटजी चाहिए हम लोग को यहाँ पे टू मेक दिस एग्जाम वेरी मच सक्सेसफुल। ओके, देन इफ आई सी अबाउट, तो यहाँ पे 4 आंसर्स ऑप्शंस में फोर्थ राउंड तक चले गए हो तुम लोग। देन इफ यू कैन करेक्टली आंसर द 3/10 क्वेश्चंस ऑफ व्हिच यू हैव नो आइडिया अबाउट, you will end up with a positive mark. Okay, you will end up with a positive mark, क्योंकि तुम लोग पढ़ाई लिखाई किए हो, तो थोड़ा बहुत तो हम लोग को आइडियाज रहता है कि हम लोग को कहां तक कैसे हम लोग को लेके जाना पड़ेगा। So therefore apply some of the logic and common sense to eliminate these wrong options, and never marks answers based on random guessing. ये इंकी पिंकी पोंकी 10 20 30, ओके, तो ये सब नहीं खेलना है वहां पे। ओके, ये सब नहीं खेलना है हम लोग को। तो देयर शुड बी एनफ क्वेश्चन टू इवन अवॉइड निगेटिव मार्किंग। और अगर मान लो कहीं पे ह्यूमन एरर कर दिए, तब तो निगेटिव मार्किंग भरा पड़ेगा। तो इसलिए यू नीड्स टू वेरी मच बी केयरफुल वंस यू आर डायरेक्टली अटेम्प्टिंग दिस नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो इसीलिए अप्लाई द लॉजिक एंड सम ऑफ द कॉमन सेंस, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम लोग का पढ़ाई काम नहीं आता है। क्या आता है पता है? कॉमन सेंस। एक बार कॉमन सेंस मिल गया ना, एक बार कॉमन सेंस के हिसाब से वो आंसर वो क्वेश्चंस देख लिए ना, तो देख लेना कि स्लोली एंड स्लोली यू कैन अचीव द फीट। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस, कुछ आंसर्स, कुछ इंटरप्रिटेशंस कॉमन सेंस से ही हम लोग को पता चल जाता है। सो दिस इज द थिंग दैट यू नीड्स टू रिमेंबर व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग दिस वेरी नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो है इन दिस रेस्पेक्टिव एरेना।
ठीक है, तो इसीलिए रैंडम गैसिंग नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को जितना चाहिए उतना कम हम लोग को क्या चाहिए, निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग जितना ही कम होगा उतना ही इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, because once you are catering towards the negative markings, then slowly and slowly they will eat up even your marks, even your effort that you have put on the paper solving. पेपर सॉल्विंग में जितना एफोर्ट लगाए हो, अगर रैंडम गैस करने लगे हो तो यहां पे हम लोग का मार्क्स काटा जाता है, और इट्स टोटली अ डिटोरिएटिंग इफेक्ट ऑन बेसिकली योर रेस्पेक्टिव गोल टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। तो ये कभी नहीं करना है, ये कभी नहीं करना, निगेटिव मार्किंग से अवॉइड करना है, जितना कम निगेटिव मार्किंग हो उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। सो दैट्स द थिंग यू नीड्स टू रिमेंबर ओवर हियर। ठीक है, कि कितना हम लोग पॉजिटिव वे में या पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़े और कैसे हम लोग को थोड़ा बहुत पॉजिटिव मार्क्स यहां पे मिले। तो ये हम लोग का मेन फंडा है, ये हम लोग का मेन गोल है। ओके, सो दैट्स द थिंग विद रिस्पेक्टिव टू दिस क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग। ओके, नाउ if I say about the probability of getting a question correct is more than 25%, we strongly suggest to take a risk and attempt that question. As per the statistical analysis, you have more probability of ending up with positive marks. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वेश्चन करेक्ट इज मोर देन 25%, अगर मान लो तुम्हारा एक यहां पे ए बी सी डी, और उनमें से मान लो यहां पे तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो ये बी ही हो सकता है, विथ प्रॉपर एनालिसिस, विथ प्रॉपर एबिलिटी, कॉमन सेंस सब लगा लिए, और सब लगा के भी मेरे को लग रहा है कि बी ही है, और मार्क करके चले आए। उस टाइम उस क्वेश्चन जो तुमने लॉजिक लगा के, कॉमन सेंस लगा के, अपना जो एफोर्ट थे पूरे साल भर या 2 साल भर जितने टाइम ने तुम लोग ने मॉक टेस्ट दिया है, विद द एक्सपीरियंस दैट यू हैव गॉट इन अटेम्प्टिंग दोस क्वेश्चंस, अगर मान लो 25% से अगर ज्यादा वहां पे कॉन्फिडेंस आ रहा है, दैट मीन्स वो क्वेश्चन और वो आंसर बेसिकली सही रहेगा। सो देयरफॉर इफ यू आर डायरेक्टली टेकिंग दिस कैलकुलेटेड रिस्क, that means you have high probability of ending up with positive marks। और हमें चाहिए क्या, पॉजिटिव ही चाहिए in the life also। basically everyone wants to be positive in nature। कोई निगेटिवली इंपैक्ट भी नहीं होना चाहता है, कोई निगेटिव ट्रेंड्स में फॉलो भी नहीं करना चाहते कोई। अगर मैं ग्राफ दिखा दूं, तुम्हारा लाइफ का ग्राफ, कि तुम ऐसे ऐसे ऊपर जाने वाले हो, ऐसे ऐसे ऊपर जाने वाले हो ग्राफ, ओके, तो तुम बहुत खुश हो जाओगे। चलो ये 2018 में था, ये 2019 में था, ये 2020 में था, कोरोना भी मेरे को इफेक्ट नहीं किए, मैं तब भी बढ़ रहा था, और 2022 2023 को मैं दिखा दिया कि तुम यहां से एकदम शूट कर जाओगे ऊपर तक ऐसे, तो तुम और खुश हो जाओगे, बिकॉज यू आर डायरेक्टली गोइंग फॉर अ रेस्पेक्टिव अप्रोच विच इज वेरी मच ऑफ गोइंग फॉर अ प्रोग्रेस रूट। लेकिन अगर मैं दिखा दूं कि तब से लेके आज तुम ऐसे डाउनफॉल में आ रहे हो, तो दैट मीन्स व्हाट, इट्स अ नेगेटिव ट्रेंड, ये एक नेगेटिव ट्रेंड है। सो इसीलिए इसको फॉलो करना हम लोग को नहीं है। सो नेगेटिव ट्रेंड को हम लोग को फॉलो नहीं करना है। सो देयरफॉर नो वन वांट्स एनीथिंग नेगेटिव इन इट्स लाइफ टाइम। एवरीवन वांट्स टू बी पॉजिटिव, एवरीवन वांट्स टू हैव सम ऑफ द पॉजिटिव अप्रोच। सो ये हम लोग को एक करना पड़ेगा यहां पे when we are attempting the questions which we basically don't know anything। तो वहां पे लॉजिक, कॉमन सेंस, वहां पे जो पढ़ा हुआ है वो सब हम लोग थोड़ा देख के आगे बढ़ते हैं। Okay, so that should be our goal over here। Okay, then if I see about this thing, that is the next point, don't lose time by the extra work involved in marking additional data। Okay, जो डाटा चाहिए उसी डाटा को रेलेवेंटली वहां पे लाओ, उस चीज को ही रिकॉल करो, उस चीज को ही सबकॉन्शियस माइंड से लेके आओ, और तब जाके देखना कि उस चीज का अगर तुम रेलेवेंस रखोगे उस चीज के हिसाब से, दैट मीन्स यू आर मेकिंग इट ऑन अ करेक्ट पाथ। सपोजिटली यहां पे मैं अगर आर्टिकल्स का बात ही बोल रहा हूं, ठीक है, तो मान लो यहां पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है अबाउट द यूनियन एग्जीक्यूटिव, अबाउट द यूनियन एग्जीक्यूटिव क्वेश्चन पूछा गया है। सो यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा गया है, तो वी शुड रिमेंबर अबाउट दैट यूनियन एग्जीक्यूटिव का जितना भी आर्टिकल्स है, दैट इज ऑल नीड्स टू बी क्रैम्प्ड अपॉन। ओके, सो यूनियन एग्जीक्यूटिव का जितना आर्टिकल्स है, सो वी नीड्स टू गो अहेड विद दिस
नंबर ऑफ आर्टिकल्स ओनली। तो यहां पे मेरे को दूसरा आर्टिकल्स रिमेंबर करना ही नहीं है। मेरे को स्टेट, मैं अगर यहाँ पे जहां पे यूनियन एग्जीक्यूटिव का बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं अगर अगर मैं स्टेट एग्जीक्यूटिव का आर्टिकल्स लेके चले आए, ओके, अबाउट सपोजली अराउंड 168, ओके, 168 के बारे में अगर मैं बोलना चालू कर दूं, सो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग को इंपैक्ट पड़ेगा। So therefore we all know about the union executive and its respective articles. तो मान लो यूनियन एग्जीक्यूटिव का डायरेक्टली आर्टिकल 52 से 78 तक आता है, और स्टेट एग्जीक्यूटिव का आर्टिकल 153 से लेके 167 तक आता है, मान लो। So in this sense we could directly see that over here we needs to make the relevance between the union executive and the state executive. तो मान लो यहाँ पे यूनियन एग्जीक्यूटिव का कुछ पूछ रहे हैं और तुम लोग डाटा किसका लेके आए हो, स्टेट एग्जीक्यूटिव का लेके आए हो, तो इसका कोई रेलेवेंस है इसमें? ऑब्वियसली नहीं है। सो therefore you should not misinterpret the data that you are recalling, that you have studied but you could not interpret it well just because you have got lack of revision. Also you have got lack of probable attempting questions when you are directly given the task to do so. So you have not attempted the mock test, you have not attempted, or if you are directly getting some of the guidance from us, so you have not attended respectively well. तो अगर ये सब नहीं हो रहा है, देन यू कुड सी, एंड ऑब्वियसली कभी कभी लोग क्या होते हैं कि लोगों को एक वो रहता है कि लाइक चलो बोल दिया तो बोल दिया, क्यों ही उसके साथ हम लोग को क्या ही करना है, ठीक है, बोला है 2 दिन के बाद दिखाएंगे, 3 दिन के बाद दिखाएंगे, 4 दिन के बाद दिखाएंगे, ओके चलो करेंगे ही नहीं। तो वो वाला अप्रोच बहुत लोग के साथ होता है। तब वो जब हो जाएगा ना, तब यहां पे तुम लोग का डिटोरेशन शुरू हो जाता है। So therefore, don't lose time by the extra work involved in marking additional data. Because once you are marking additional data, that means you are getting some irrelevant facts. और उस irrelevant facts से तुम लोग को गलत इंटरप्रिटेशन निकल के आ जाएगा। और वहां पे जो क्वेश्चन ऑलरेडी तुम जानते नहीं हो, वहां पे अगर एडिशनल डाटा लेके आए, irrelevant facts लेके आए, तो वो क्वेश्चन तो ऐसे ही रॉन्ग होना है। तो उसमें तो 1E 25% कैलकुलेटेड रिस्क वो सब भी काम नहीं आएगा। So therefore you needs to make these things very much of appropriate so that you could achieve these things in a higher proportions. Okay, so therefore don't lose some of the extra time and some of the extra work that is involved in marking some of the additional data. Okay, so ideally you should start bubbling at least the 45 minute in the prelims. Okay, so यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब लास्ट के 45 minutes बचे हुए हैं, उस टाइम मार्किंग्स शुरू करो ओएमआर शीट में। ओके, उससे पहले हम लोग को कोई लेना देना ही नहीं है किससे, ओएमआर शीट से। बस अपना वहां पे रोल नंबर लिखो, ओके, जो वहां पे डेट होता है, सेंटर एग्जामिनेशन, जो जिस वहां पे फिलअप करना होता है वो फिलअप करके बस ओएमआर शीट को साइड में लग के छोड़ दो। जीएस पेपर में या कोई भी क्वेश्चन पेपर में आप लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेंगे और लास्ट में रफ शीट्स मिलता है। तो कुछ भी अगर एनालाइज करना है, कुछ भी अगर लिखना है, कुछ भी अगर डायग्राम्स ड्रॉ करना है, कुछ भी अगर रिकलेक्ट करना है, तो उस रफ शीट्स में करो। ओके, और एक पेंसिल हमेशा कैरी करो, एक पेंसिल हमेशा कैरी करो और पेंसिल से मार्क करो। ओके, द क्वेश्चंस व्हिच यू आर प्रीटी श्योर, जो एकदम श्योर है, जैसे मैंने बोला था 3E में, उसको चाहे हो तो ऐसे मार्क करके रख दो विथ अ पेन। मैं ओएमआर शीट में नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन पेपर में बोल रहा हूं। क्वेश्चन पेपर में मार्क करके छोड़ दो द प्रीटी श्योर नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू नो वेरी परफेक्टली, वो छोड़ के वो करके वहां पे छोड़ दो। ओके, क्योंकि वो उसमें डायरेक्टली हम लोग को फिर से दिमाग नहीं लगाना है। ओके, दैट 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 30 to 35 जो भी हो, कभी कभी 40 भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स। तो उसमें हम लोग को दिमाग लगाना ही नहीं है, तो उसमें वापस हम लोग आएंगे ही नहीं। जो हो गया सो हो गया। हम लोग को और स्टेजेस पार करना है, 2E स्टेजेस पार करना है, 1E, कभी कभी 0E भी काम आ जाता है। सो इसीलिए यू हैव टू डायरेक्टली गो फॉर दिस नंबर ऑफ क्वेश्चंस, पेन से मार्क करके रख दो, इसमें विजिट करना ही नहीं है। और बाकी पेंसिल उठा लो, कुछ रफ वर्क करना है, कुछ इंटरप्रिटेशन डिटेक्ट करना है। ओके, सपोजली मैं कभी हम लोग के क्लास में हम लोग बहुत सारे न्यूमोनिक्स सिखाते हैं। ओके, न्यूमोनिक्स सिखाते हैं। इस न्यूमोनिक्स में क्या होता है, इजी होता है रिमेंबर करने के लिए कि पार्ट्स कैसे याद रखा जाता है, आर्टिकल्स कैसे याद रखा जाता है, ये हम लोग सिखाते हैं क्लास में। एंड दिस थ्रू दिस न्यूमोनिक्स यू कुड इजीली इंटरप्रेट
मैं तो हमेशा बोलता हूं अपने बच्चों को कि जब भी यू आर डायरेक्टली गोइंग इट योर प्रीलिम्स, जो मैं निमोनिक सिखाता हूं क्लास में, वो सब पहले रफ पेज में जाके लिख दो। ओके, जो भी छोटा मोटा न्यूमोनिक्स बेसिकली रिलेटेड टू द सब्जेक्ट्स लाइक दिस इकोनॉमिक्स, ओके, सब्जेक्ट्स लाइक दिस पॉलिटी, ये सब में जितना भी न्यूमोनिक्स होता है याद रखने लायक, ओके, वो सब जाके पहले जो रफ शीट है उसमें भर दो। उसके बाद क्वेश्चंस खोलो, क्योंकि एक बार क्वेश्चंस देखोगे ना तो तुरंत ही जो याद करके आए थे वो सब भूलने लगोगे, क्योंकि तुमको लगेगा कि ये सब इरेलेवेंट है, इरेलेवेंट, इरेलेवेंट, ऐसे करके कभी कभी रेलेवेंट वाला भी छूट जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमेशा जाके पहले बार में अगर रफ पेजेस में जो भी हम लोग का निमोनिक्स याद है, कुछ याद है, वो सब लिख लो। ओके, क्योंकि हमेशा पेपर देने के बाद क्या होता है, थोड़ा बहुत टाइम रहता है हम लोग के पास, ठीक है, 5 मिनट का टाइम रहता है, उसके बाद ही सील को तोड़ने का 1 घंटा बचता है, तब जाके तुम सील तोड़ पाते हो। तो उसके बाद यू हैव टू उस टाइम बस लिख के रखो, पेंसिल से लिख के रखो। ओके, पेंसिल से ऐसे लिखो, अच्छा ये था, ये था, ये था, सर ने ये बोला था, अच्छा ये थे। तो जब क्वेश्चंस खोलोगे, अगर मान लो बाय चांस इंटरप्रिटेशन कभी कभी रॉन्ग हो जाता है, मान लो कभी कभी स्ट्रेस में हम लोग को इजी चीज भी याद नहीं आ रहा है, गो बैक टू दिस न्यूमोनिक्स, वहां से आराम से इंटरप्रिटेशन हो जाएगा कि कौन सा सही ऑप्शन है। सो दैट इज द थिंग यू नीड्स टू फॉलो ओवर हियर। ओके, सो देयरफॉर you should go ahead with the question paper for a period of around the 1 hour 15 minutes। चलो ये 45 मिनट्स, कभी कभी मैं, चलो तुम लोग 30 मिनट भी ले सकते हो। 2 घंटे का पेपर होता है, 1.5 घंटा क्या करना है, 1.5 घंटा तुम लोग क्वेश्चंस को पढ़ो, पेपर्स को पढ़ो। इन द लास्ट हाफ एन आवर गो फॉर द मार्किंग, गो फॉर द बबलिंग, उसमें बबल करना स्टार्ट कर दो। ओके, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूं 45 मिनट्स से पहले बबल करना है हम लोग को, 45 मिनट्स के बाद बबल करना है हम लोग को, सॉरी लास्ट 45 मिनट्स में बबल करना है हम लोग को। इट्स बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि लाइक बहुत सारे यहाँ पे क्या होता है, लाइक हम लोग को पता है कि लाइक जो इन्विजिलेटर्स होते हैं, ठीक है, सो उस इन्विजिलेटर्स में कभी कभी साइन लेने आते हैं, ठीक है, तो कभी कभी तुम्हारा आईडी वेरिफिकेशन करवाते हैं, ठीक है, फिर 2 जगह साइन लिया जाता है, तो वो सब होता रहता है कभी कभी। तो उन सब में कम से कम हम लोग का आराम से 5 से 10 मिनट चला ही जाता है। ओके, साइन करो, यहाँ पे साइन करो, फिर एडमिट कार्ड निकालो, ओके, फिर आई कार्ड निकालो, ठीक है, फिर ओएमआर शीट वो देखते हैं, तो ये सब थोड़ा बहुत कुछ होता है, ठीक है, फिर एडमिट कार्ड में साइन करते हैं, तो ये सब में हम लोग का कम से कम 5 से 10 मिनट चला जाता है। तो 10 मिनट तो मान ही चलो। तो मान लो तुम लोग अगर 2 घंटे का एग्जाम देने जा रहे हो, दैट यू आर अटेम्प्टिंग ओनली 1 hour 50 minutes, तो इतना ही मिलेगा टाइम, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहां पे बोल के रखा हूं 45 मिनट्स। तो लास्ट के 40-45 मिनट्स में हम लोग को क्या करना है, बबलिंग स्टार्ट कर देना है, ताकि वी कुड कंप्लीट दिस थिंग ऑन टाइम। ओके, और हमेशा एक याद रखना कि 5 मिनट का एक हम लोग को एक गैप होना चाहिए अंटिल द टाइम वी आर सबमिटिंग दिस रेस्पेक्टिव ओएमआर शीट। 5 मिनट का एक गैप होना चाहिए। ओके, तो मान लो अगर मैं जस्ट ऑप्शन बता रहा हूं कि 10 बजे से शुरू हो रहा है और 12 बजे तक हम लोग का खत्म होने वाला है एग्जाम, ठीक है। सो यहां पे हम लोग को 10:30 के, सॉरी 10:30 नहीं, 11:30 तक हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चंस ऑल करके डन कर देना है। उसके बाद आधा घंटा आराम से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू गो, चलो 11:30 नहीं, ये 11:20 कर लो। सो आराम से इन दिस 40 मिनट्स, क्योंकि मैं 10 मिनट बोल ही रहा हूं, इस सब में चला ही जाएगा साइनिंग वाइनिंग करने में। सो आराम से ये 40 मिनट्स में हम लोग को क्या करना है, आराम आराम से बबल 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 करना है, ताकि हम लोग का यहां पे रॉन्ग ना हो। क्योंकि जो क्वेश्चन हम लोग ने दिमाग लगा के आंसर्स निकाला है, just because of your casualness, just because of your insincerity, just because of your lack of attention, एक दूसरा ऑप्शन वहां पे मार्क हो जाएगा। और एक बार दूसरा ऑप्शन मार्क हो गया, दैट मीन्स वो आंसर गया, उसका राम राम सत्य है हो जाएगा। सो देयरफॉर यू कैन नॉट डू और यू कैन नॉट डायरेक्टली गो फॉर अनडूइंग सच थिंग्स विच इज बेसिकली मार्क्ड बाय यू ओनली। गलती को सुधारना वहां पे काम नहीं आता है। ओके, जो गया सो गया। सो देयरफॉर यू आर लूजिंग 1 नंबर ऑफ क्वेश्चन ओवर हियर, नेगेटिव मार्किंग आ गया वहां पे। तो निगेटिविटी, ठीक है, सो उस निगेटिविटी से टेंशन ज्यादा आता है फिर से,
कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर होगा, मेरा प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं होगा, टेंशन से आ जाता है। और उसका इंपैक्ट कहां पे पड़ता है? उसका इंपैक्ट पड़ता है मेंस के प्रिपरेशंस पे। तो इसीलिए वी कैन नॉट अफोर्ड टू गो अहेड विथ सच अ प्रोसेस। इसलिए हम लोग वो सब अफोर्ड कर ही नहीं सकते। इसलिए हम लोग को क्या करना है? वी हैव टू बी प्रीटी श्योर अबाउट व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट वी नीड्स टू डू ओवर हियर। Okay, so therefore, at the very last 40 minutes to 45 minutes, you should go and start bubbling your respective OMR seats. और उसके बाद बबल करके आराम से, ओके, बबल करने से पहले आराम से अच्छे से देखना है कि मैं ए को ही मार्क कर रहा हूं। एंड ऑल्सो गो ऑन फॉर फुल मार्किंग्स। ओके, ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा। ठीक है, ऐसे 4 गोला है यहां पे, ऐसे ऐसे करके 4 गोला रहते हैं ए बी सी डी। तो ऐसे आधा अधूरा करके मत आओ, आधा अधूरा करके मत आओ, इसको डायरेक्टली कंसिडर नहीं किया जाएगा। करना है तो पूरा करो। ओके, अगर करना है तो पूरा करो। ओके, आराम से एक पेन लेके जाओ, जितना हो सके उसमें से आराम से भर दो पूरा। ब्लू हो या ब्लैक पेन हो, ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट इज वेरी मच अलाउड। डोंट टेक जेल पेन्स। ठीक है, जेल पेन्स कभी मत लेना। तो आराम से उसको गोल कर दो। ओके, कुछ भी यहां पे व्हाइट छोड़ना ही नहीं है, जितना हो सके गोल कर दो। ओके, देन दिस क्वेश्चन और दिस पॉइंट विल बी कंसिडर्ड ओके फॉर यू। इसको तब कंसिडर करेंगे कि हाँ चलो ये ओके है, दिस इज वेरी मच ओके। सो डियरफॉर यहां पे हम लोग को ये करना है, ये सब करना ही नहीं है। ओके, और फिर कभी कभी वो सब होता है जो मैंने अभी भी बोल रहा था कि अगर मान लो ऐसे कि ओ सॉरी सॉरी ये तो गलत था, मेरे को सी मार्क करना था, तो मैं ये क्रॉस करके ये पूरा कलर करके इसको राइट कर देता हूं, ये तो टोटल रॉन्ग ही हो जाएगा। दिस इज टोटली एन इनवैलिड क्वेश्चंस। और यहां पे डायरेक्टली क्या आ जाएगा? निगेटिव मार्किंग आ जाएंगे, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट श्योर अबाउट योर ओन आंसर। तो इवैल्यूएटर को पता चल जाएगा कि दिस पर्सन डज नॉट नो अबाउट व्हिच क्वेश्चन और व्हिच आंसर ही इज डायरेक्टली अटेम्प्टिंग। तो इसीलिए यहां पे ये सब हम लोग को गलती नहीं करना है। सो देयरफॉर यू हैव टू बी सिंसियर विथ द मार्किंग्स, विद द रेस्पेक्टिव बबलिंग दैट यू आर डूइंग ओवर हियर। सो ये हम लोग को यहां पे एक्सट्रीमली एसेंशियल है करना, व्हिच इज वेरी मच रेलेवेंट अपॉन हियर। Okay, so therefore, ideally, you should start bubbling for at least 45 minutes before your submission, final submission. Okay, और ये सब obviously कब आएंगे? जब you are directly attempting some of the test. Okay, और उस टेस्ट में, that is the mock test, be it online, okay, or be it offline, we have got both the courses. जो आप लोग का mock test series होंगे वो offline भी होगा and online is also very available in our respective apps. So you can register and even go forward with this number of MCQs, that is going ahead with the relevant questions, that is around past 25 years questions, past year solved question papers, उसके साथ answers, explanation सब मिलेंगे आपको. So therefore you needs to go ahead with this type of questions which we are providing. So therefore that may be very much important for you to analyze this table which I have just mentioned. तो ये बहुत कीमती होंगे आप लोग के लिए, बहुत कीमती होंगे, बिकॉज दिस 3E 2E 1E 0E ये सब एक बार मार्क कर लोगे ना, और अगर मान लो क्वेश्चंस दे दोगे ना, 30-40 मॉक टेस्ट भी दे दोगे ना, दैट विल बी वेरी मच सफिशिएंट फॉर यू। और उसी के बेसिस पे हम लोग ने प्लान किया है कि वी विल डायरेक्टली कंडक्ट सम ऑफ द 30 मॉक टेस्ट सीरीज, और उसमें हम लोग का एक कैटेगरी वाइज रहेंगे और ऊपर से एक सब्जेक्टिव वाइज भी रहेंगे, जहां पे सब्जेक्टिव वाइज मतलब नॉट ऑब्वियसली द राइटिंग, जो मैं बोल रहा हूं कि ओवरऑल, ओके, ओवरऑल पूरा सिलेबस कवर रहेंगे। तो यहां पे सेक्शनल्स भी मिलेंगे और यहां पे जो ओवरऑल सिलेबस है, टोटल सिलेबस, ये टोटल सिलेबस भी हम लोग को मिल जाएंगे। ठीक है, सो देयरफॉर वी आर डायरेक्टली गोइंग अहेड विद दिस प्रोग्राम। ओके, और हम लोग का ये प्रोग्राम बेसिकली फोकस्ड है ऑन द प्रीलिम्स पर्पस। उसके बाद वी विल डायरेक्टली कम अप विद द मेंस। मेंस से पहले हम लोग जैसे प्रीलिम्स का ये सेशन लिए हैं, तो मेंस से पहले हम लोग फिर से मेंस ओरिएंटेड सेशंस लाएंगे और उसमें एक्सक्लूसिवली डिफाइन करेंगे कि एक मेंस का आंसर रिटर्न कैसे लिखा जाता है, किस किस कंडीशंस के बिना पे हम लोग एक मेंस का आंसर राइटिंग लिखते हैं। ओके, कैसे हम लोग का एक मेथड रहता है। ओके, दैट इज द मेथड। ओके, इन मेंस वी कुड सी एक मंत्र रहता है हम लोग का मेंस का, which is basically the mantra, okay, of which is the 753 rule of answer writing.
ओके, सो ये बहुत एक रेलेवेंट थिंग है, दैट इज द 753 रूल ऑफ आंसर राइटिंग, विच विल बी एक्सप्लेन टू यू बिफोर द मेंस। क्योंकि अभी हम लोग अगर मेंस का ये बता देंगे, बिकॉज पीपल विल बी लेस श्योर अबाउट द मेंस पर्सपेक्टिव। बहुत लोगों का ये मानना होता है कि हम लोग पहले प्रीलिम्स कर लेते हैं, उसके बाद मेंस में जाएंगे, तो ये बेसिकली एक मानना होता है। लेकिन मेरे हिसाब से हम लोग को उल्टा करके आना पड़ता है कि लाइक यू हैव टू कम फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग का अभी फिलहाल के लिए जो हम लोग का प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्लासेस है, ओके, ये क्लासेस ऑब्वियसली हम लोग का कंडक्ट किया जाएंगे, जहां पे हम लोग एक्सक्लूसिवली डिटेल्ड में हम लोग जो एनालिसिस करेंगे ऑफ द रेस्पेक्टिव क्वेश्चंस विद रेस्पेक्टिव टू दिस एमसीक्यूज, ये हम लोग लाइव क्लासेस लेके आएंगे। ठीक है, एंड देयरफॉर यू कुड सी दैट वी हैव गॉट मेनी प्रोग्राम्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का टेस्ट सीरीज भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, तो यू कुड सी दैट at just a minimal cost of rupees 3000, by scanning this code also you could directly make ahead this number of टेस्ट। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या क्या टेस्ट है। ये सेक्शनल टेस्ट है, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ओके, तो सेक्शनल भी रहेंगे, फिर सी सेट भी रहेंगे, उसके बाद हम लोग का 4 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे, जहां पे यू कैन गो अहेड। यहाँ पे करंट अफेयर्स का भी रहेंगे, स्टैटिक पोर्शंस भी रहेंगे, सब रहेंगे यहाँ पे। सो देयरफॉर यू नीड्स टू गो एज सून एज पॉसिबल टू मेक। और ये हम लोग का आराम से 17 डेज का एक प्रोग्राम है। ओके, बिकॉज वी आर लेफ्ट विथ अराउंड 2-3 मंथ्स। ओके, तो आराम से हम लोग के पास बहुत टाइम है अभी प्रीलिम्स का प्रिपेयर करने के लिए। तो इसीलिए ये 17 डेज का एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है जो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। ओके, एंड विच यू कैन डायरेक्टली प्रोक्योर फ्रॉम आवर साइट, एंड ऑल्सो यू कैन स्कैन दिस कोड टू डायरेक्टली रजिस्टर फॉर दिस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। ओके, सो इट्स बेसिकली एट रुपीज 3000, और इसका टाइम शेड्यूल भी सुइटेबली आप लोग के हिसाब से कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, ऑल्सो इफ यू आर डायरेक्टली मेकिंग प्रीलिम्स क्रैश कोर्स ऑफ APSC CCE 2022-23, तो ये एक ऑनलाइन कोर्स फी है एट अ मिनिमल कॉस्ट ऑफ रुपीज 5000। तो यहाँ पे हम लोग हाईली इंटेंसिव स्पेशलाइज्ड क्लासेस फॉर 1000 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रीलिम लेक्चर्स 300 प्लस आवर्स। ओके, यहाँ पे सॉफ्ट कॉपीज मिलेंगे आप लोग को स्टडी मटेरियल्स का, 2 ईयर करंट अफेयर्स कंपाइलेशन मिलेंगे, इट्स बोथ नेशनल एज वेल एज असम स्पेसिफिक, फिर 30 प्रीलिम्स मॉक टेस्ट सीरीज, एंड ऑल्सो सम ऑफ द रेलेवेंट सीसेट लेक्चर्स। तो ये हम लोग का प्योरली अवेलेबल है इन दिस ऑनलाइन कोर्स। ओके, ऑल्सो इफ यू वांट्स टू जॉइन अस ऑफलाइन, सो दैट बहुत लोगों का ये होता है कि दे आर प्योरली इनटू दिस रेस्पेक्टिव अफेयर ऑफ सिविल सर्विसेज। ओके, बहुत लोग फ्रेशर्स हैं, तो इफ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू गो अहेड विद दिस प्रोसेस, देन यू कैन कम अप विद दिस कोर्स। और जो ये 3 सेशंस ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं, ओके, एक्सटेंसिवली, सो उनके लिए एक स्पेशल ऑफर रहेंगे। ओके, इन दिस ऑल्सो 15,000। तो उसके अलावा भी जो लोग नया करके आएंगे, अभी फिलहाल के लिए ये डिस्काउंट चल रहा है, दिस न्यू ईयर ऑफर, वी कैन सी इट इज टू बी 15,000। ओके, सो यहाँ पे हम लोग का ऑल दिस रेस्पेक्टिव मेंशन थिंग्स विल बी क्लियरली डिस्कस, एंड उसके अलावा उनको ऑफलाइन क्लासेस का एक इंटरैक्शन और 1-to-1 इंटरैक्शन का एक हम लोग को यहाँ पे एक सुविधा उन लोग को मिलेंगे। ओके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए यहाँ पे हम लोग गूगल मीट या जूम मीट या कोई भी हम लोग का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मीडियम है, तो वहां पे हम लोग 1-to-1 इंटरैक्शन करेंगे। और यहाँ पे जो ऑफलाइन वाले हैं उनके साथ हम लोग बैठ के हमारे ऑफिस में, हमारे सेंटर्स में आराम से वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। यू विल ऑल्सो गेट एन एक्सेस टू सम ऑफ द फ्री बुक्स दैट आर अवेलेबल इन आवर सेंटर। ओके, वहां पे हम लोग यू कैन डायरेक्टली गो एंड यू कैन स्टडी इन आवर रेस्पेक्टिव लाइब्रेरीज। तो ये हम लोग का एक ऑफर है वहां पे, विच इज वेरी मच कमिंग इन द कमिंग टाइम्स पीरियड, which is basically focus on this respective APSC prelims। okay, तो इसके लिए हम लोग का ये कोर्स है। इसके अलावा we could see that we are coming up with a course basically focusing on this APSC CCE prelims course which is very much free। तो ये 3rd जनवरी से हम लोग का शुरू हो जाएगा। ठीक है, और this basically we have got a 3 days free session। 3 दिन का हम लोग का एक फ्री सेशन रहेंगे। ओके, 3 डेज का एक फ्री सेशन रहेगा, और उसमें हम लोग एक एक्सटेंसिव क्लासेस कवर करेंगे कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दिस। ठीक है, उसके बाद यू विल डायरेक्टली गेट एन एक्सेस फ्रीली, बट यू विल गेट इट ऑन द रेस्पेक्टिव CSAP ऐप। ओके, ये 3 डेज वी विल बी एक्सटेंसिवली कवरिंग इट इन द यूट्यूब चैनल ऑफ अस, जस्ट लाइक व्हाट वी हैव डन टुडे। इसको एक्सटेंसिवली यहाँ पे कवर किया जाएगा। Okay, so that will be seen from this 3rd January, where all these respective topics will be covered in a very extensive way। Okay, and basically it will be focused on prelims purpose। जो ऑनलाइन सेशंस वाले हैं या जो ऑफलाइन सेशन वाले हैं, उनको बोथ यहाँ पे कराया जाएगा। बोथ उन लोग का ऑनलाइन या मेंस के लिए यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएंगे।
ओके, बी इट द ऑनलाइन ऑफलाइन, यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस के लिए बोथ के लिए उन लोग को प्रिपेयर किया जाएंगे. So that we can see in the coming times. Okay, so 3rd January say please do visit us and also come towards us so that we could make this APSC CCE Prelims 2022 a great success. ठीक है, तो उसी के बेसिस पे आज का ये डिस्कशंस था. ठीक है, so you could also call us in this respective number, that is 91275 15541. Also, you could come ahead with this links csap.co.in. Also, if you wants to avail the prelims crash course, you can go for with this link. If you wants to attempt this test series, that is the mock test series of us, okay, you will get this link. Also, if you are coming up to this GS Foundation course, you can directly click this link with and talk to our representatives so that you could avail the early bird offer. Okay, so this offer will not last long. So as soon as possible, if you come, we will directly make this offer available to you all. Okay, so please do call us on this number and just give a feedback about how you have liked this session and how much you are very much interested to join our courses and also join our 3rd January free live seminars, which will be conducted regularly on the basis of the APSC prelim specific subjects. Okay, so that is all from my side today. So as of for now, I'm just signing off. Okay, so I thank you all for having this platform make a success with this respective 3-day prelims oriented sessions. Okay, so we end up this session over here. Okay, so any queries or any suggestions or any feedbacks are always welcome. And if you wants to join any type of courses, please do join us soon so that you can avail this early bird offer. Okay, so that's all from my side today. Thank you and Jai Hind. So people, if you have got any type of queries, you can ask on, or else it's time for you on me to say sayonara. Okay, chalo, thank you all people.